So, hello English learners, hope you all are fine, and today we are going to learn about the would like to. Okay, so we are learning from this book, Mass Spoken English book, and today's chapter is 12th. Okay, so let's start how we are going to use would like to. Okay, and I know you have just listen all these words most of the time. So, would like to. What is the definition of would like to? Okay, so जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा विश ओके या पसंद बताना होता है तो वहां पर would like to का यूज करता है. ओके, सो डिफिनेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, if someone wants to just express his wish, so he is going to use would like to. Okay, would like to, फॉर एग्जाम्पल, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहूंगे. आई वुड लाइक टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू ईट मैंगो, मैं आम खाना चाहूंगा. सो इस तरह से इसका मीनिंग है. ओके, वुड लाइक टू सिंगुलर एंड प्लूरल. स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, देन वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मैं खाना खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ईट फूड. आई वुड लाइक, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. आई वुड लाइक टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहूंगा. सो सब सिंपल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मैं खाना खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ईट फूड. मैं खाना खाना नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू ईट फूड. मैं खाना नहीं खाना चाहूंगा. क्या मैं खाना खाना चाहूंगा? वुड आई लाइक टू ईट फूड. क्या मैं खाना खाना चाहूंगा? मैं खाना, क्या मैं खाना खाना चाहूं नहीं खाना चाहूंगा? वुड आई नॉट लाइक टू ईट फूड. मैं खाना खाना क्यों चाहूंगा? Why would I like to eat food? So like this you can make sentences. There are 60 sentences which we can practice and understand everything about would like to. Okay, so I hope you understand, and so thanks for today. Tomorrow we are going to practice another thing. Okay, thank you.